I am Vakas Nasir and I welcome you to Jali Talk Show. Sheema Kermani, a name synonymous with grace, beauty, empowerment and resilience. Being an advocate for women's rights and artist for many years, she has borne a lot of hardships. In this interview, you get to know about her journey in her own words, her views about art as a medium of education and personal development, her views about the role of state, and division on the basis of religion. What inspires her? What keeps her motivated? And what is she most proud of? I hope you enjoy this conversation as much as I did. Hello ma'am, how are you? मैं बस ठीक हूँ. So recently you were at Children Literature Festival as well. तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि आपको क्या लगता है कि जो हमारे पास अदाकारी का फ़न है और हमारे पास जो रक्स का फ़न है, through that art, how can we educate the masses and especially the children? Okay. देखिए, I think it is a two-way process. Okay. पहले तो यही देख लेते हैं कि इन आर्ट से डांस, म्यूजिक, थिएटर, all the performing arts, how they can help create a more enlightened and better human being and student. Okay. यही बात करना चाह रहे हैं ना, जैसे कि how these arts can help or can be used as education. For me, the performing arts are actually an alternative form of education. Right. Especially in a society where there's so much illiteracy. मतलब सिर्फ नाम लिख लेना या पढ़ लेना is not really makes a literate person. मतलब you have to be knowledgeable. इल्म की बात है ना, वो सिर्फ लिटरेसी से तो नहीं है ना. उसमें you have to facilitate the students कि अपने दिमाग को वसी करें, और वो वसी करने के लिए रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, राइटिंग इज इम्पोर्टेंट. दिमाग को सोचने के डायरेक्शंस में लगाया जाए, नॉट के रट्टा लगाना जैसे हमारे एजुकेशन में होता है, बट द थिंकिंग प्रोसेस नीड्स टू बी ओपनड आउट एंड दैट वी डू नॉट डू इन आवर एजुकेशन. They need to mentally grow. They need to be questioning, they need to think about everything. तो देखिए, थिएटर जब हम करते हैं तो मकसद यही होता है कि that through our art we want to provoke people to think. Right. To think about themselves, to think about their environment, to think about their lives, to think about their neighborhood, and to think, finally, that where does the power to change lie? The power to change lies within them, within us, within ourselves. And so we need to access that power. We need to understand कि हम खुद ही जब समझेंगे तो हम बदल सकते हैं अपनी जिंदगी और अपने इर्द गिर्द का माहौल और इर्द गिर्द की जिंदगी. So when you train students in these directions, then only are those students going to be meaningful citizens of your society. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आर्ट्स का, क्योंकि आर्ट्स आपके दिमाग को खोलते हैं. They open up your imagination basically. And imagination is the most important thing. Einstein said कि maths can take you, mathematics can take you from here to there. कि आप straight line समझ सकते हैं और इधर से उधर पहुंच सकते हैं, मगर imagination can take you anywhere in the world. मतलब beyond this, you know, I mean, once you open up your imagination, the arts is what opens up imagination.
स्टोरी टेलिंग हो, थिएटर हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, पोइट्री हो, यही चीज़ें तो आपके दिमाग इमेजिनेशन को खोलती हैं. आप एक किताब पढ़ते हैं, यू स्टार्ट इमेजिनिंग, oh that character or that animal must be like this. Because I think the brain is an incredible organ. और उसको तो अभी तक सही तरीके से डिस्कवर भी नहीं किया गया है. तो इतनी सारे एलिमेंट्स हैं हमारे ब्रेन में which we still not using obviously, you know. So yes, yeah. So this is how I think, and then of course कि the aspect of storytelling है. जैसे हम थिएटर करते हैं और हम गरीब लोग उन लोगों को दिखाते हैं जो कि अनपढ़ हैं, मिसाल के तौर पे औरतें हैं खासकर, और हमारे थिएटर में कहानी है और उस कहानी के जरिए हम कुछ कह रहे हैं. So we are putting in messages, rights, in basic human rights messages built into our story. तो वो भी जब लोगों को पता चलता है, so that's so this is how you educate them. देखिए, खड़े होकर स्पीच दे देने से 2 मिनट के बाद people switch off, you know, because you're bored. कौन सुनना चाहता है किसी की तकरीर? मगर जब आप कहानी देखते हैं और कहानी आप देख रहे हैं जिसमें डांस भी है, मूवमेंट भी है, गाना भी है, एक्सप्रेशन भी है, और पता नहीं शायद कपड़े बदले जा रहे हैं, and also so then you like that, you know, you're watching and you're engrossed in that. And तजस्सुस इंटरेस्ट से ज़्यादा ये है कि आपका दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व होते हैं. So you're touched emotionally and you're touched intellectually, mentally. So when you're stimulated mentally and you're touched emotionally, that is when things start happening within you. You start thinking. You start thinking, अच्छा ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है. Child, you have beautifully put it into words. So that's one aspect. You know, मैंने जो कहा कि the other is to create artists who can do all of this. Also, you need education. Because those artists who can do all of this work also need to be very developed in their sense of aesthetics, in their sense of in their conceiving of things, their perception of things, and their understanding के कहना क्या है. क्योंकि देखिए, जब तक आपको ये नहीं मालूम कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पे आप देखें हमारे टेलीविजन में, they have nothing to say. And what they have to say is so damaging. मतलब basically what they are saying is wealth is important. What they are saying is ऐसे कपड़े हो, वैसे कपड़े हो, इसके पास पावर हो और ये थप्पड़ मार ले और औरत को इस तरह से डिमीन कर दें, ह्यूमिलिएट कर दें. मतलब बिल्कुल गलत ख्यालात पहुंचा रहे हैं ना. और फिर ऊपर से वायलेंस उसके अंदर इतना इनबिल्ट होता है. एक थप्पड़ मार दी तो एक थप्पड़ मारना फिर एक एक्सेप्टेड चीज़ बन जाती है, नॉर्म बन जाता है सोसाइटी में. So this is how I think all this works. Well, yeah, beautifully put it into words. When there was an era in 1960s or 70s when I would say कि arts इतने promote नहीं किए जाते थे और बहुत से restrictions थी, and I read a lot of performers fled the country. जी. You were the one who stayed, and you took, you know, like classes from India, and you learned a lot of techniques like Odissi, Kathakali, Kathak, Yes. Bharatnatyam. Yeah. Like that's all I know. And after learning all those techniques, you came back. So you had the exposure what an artist needs. So पहली बात तो ये कि what do you think कि उस वक्त का जो ज़माना था, were they against this classical form of art, or were they against the women empowerment? Well, I think it is actually both. ये बात है not 60s and 70s की. ये बात, this is a time of General Ziaul Haq when he came into power. So it is in the early 80s actually. 79 में 79, 80, 81, 82, 83. These are the times when he tried to bring in all these so-called Islamic laws, and basically they were anti-women laws and they were anti-art laws. And the idea, and it was his idea of Islamizing Pakistan.
So I think all these laws that he brought in actually were very, very anti-women and anti-art. दोनों चीज़ें साथ साथ जाती हैं. Right. और why anti-art? Because I think As you arts are mentioned, so yeah. yes, exactly as I said, arts are almost become subversive because they Exactly. force the person who's watching to think. Exactly. अब हम an establishment that wants to control does not want its people to think. वो तो ये चाहते हैं कि बस they just follow what we say without thinking. So that is why arts are also banned in a sense. Right. This was in the early 80s that this started happening, and और फिर television पे, stage पे, हर जगह पे, and there was a huge censorship on scripts. Like, I mean, if we did a play, the script had to go to the Ministry of Information, और वहाँ से वो censor होके आता था, and their sense of morality was being inflicted on us. Now, what was their sense of morality? Their sense of morality was कि ministers के घरों के अंदर मुजरा हो सकता था. There was no stopping of that. I mean, all these big bugles and they all had women from the so-called red light area coming and dancing for male titillation, but they could not tolerate the classical arts. So basically it was creating a very hypocritical society. Exactly. So now when do you see that? जब आपने वाली बात कही है ना कि like there was a lot of, you can say, filtration, कि उसमें like filter करते थे कि like which content should be, you know, like yes, absolute broadcasted and all. censorship, absolute censorship. Do you think we are going back to that era? Because I recently heard कि like Pembra has said you cannot broadcast the dramas in which like people are hugging or like, you know, like. Absolutely. I think we in the last especially I think in the last 5-10 years more so, and even I would say even from earlier than then, we have started moving backwards rather than forwards. As a society, as a state, as a country, I feel we are not moving forward, we are not developing, we are regressing. हम लोग पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं. अब आप देखिए कि 1971 से पहले जब PTV आ गया था पाकिस्तान में, PTV came in the late 1960s ना, 68 वगैरह में, तो there were women who would be wearing saris, there were women wearing sleeveless clothes, and women could smoke on the television. I mean, it was a more open, more liberal society. More inclusive, I would say. More inclusive. वो तो खैर शुरुआत से, पाकिस्तान की शुरुआत से ही ये चीज़ें शुरू हो गई कि Christians started leaving, Goanese started leaving, Parsis started leaving, all the non-Muslims. This is when, especially when all these non-Muslim laws started being brought in, this is what started happening. So and today you know what is so sad is that there are all these laws where religion is used to kill people. Okay, these people are Christians, they've done this, kill them all. I mean, burn their villages, burn. I mean, just blame them for so one thing and instead just burn of them. creating an environment of love and acceptance, we have been in the last 30 years, 40 years, been creating an environment of hatred and violence and intolerance. I mean, you know, and then the culture, the Kalashnikov culture that came in, so it became very easy. I don't like your face, I don't like what you're wearing, I'll kill you. I mean, if I have a weapon. You know, this is how it has been, and this is not a society that we can call civilized. And exactly. If anybody can get up and shoot somebody, take somebody's life, then it's the end of civilization. It is the end of civilization. So, as I said, like, you have been to India and you have learned different art forms. So you got the exposure what an artist needs. But do you think that the classical artists that we have in Pakistan right now are getting the exposure that is needed? Because I think there are very few people in Pakistan who are promoting this art. Like, I know you, I know Miss Nahid Siddiqui, but I don't feel like there are
a lot of names who are doing these kind of things. So how does that make you feel, that how these cross-border relations are affecting the progress and growth of artists? So I have been actually involved in these arts from a very young age. Yes. Just because I was very fortunate to come from a family that was very open towards arts and very interested in music and dance, more as an audience and as from the point of view of being seeped into the culture of it all. So I mean, from a young age I learned Western classical music and dance and all these creative arts, but we have created a society which really puts down these arts, looks at them as something unnecessary in society, and something that is frowned upon, and totally frowned upon. So that's very sad. So yes, I think presently, if we look at our society and at Pakistan, I feel the classical arts are not just dying; they're almost dead. Almost dead. आप देखें, we have in the last 30 years, we have not produced one male or female classical singer of any name. Can you name me one? A classical singer who can go anywhere in the world and be appreciated. We haven't produced great artists in the last 30-40. In fact, we haven't produced great scientists either. I mean, I think the last scientist was Professor Abdus Salam, and what we did to him. So when you start dividing society on the basis of religion, when you start creating these hatreds between people, and then when you start telling your children that these people are right and these are wrong and these are better and those are worse, then you cannot have a society that is exactly. You can't have and then of course, as far as the arts are concerned, I mean, my sitar ustad, he used to say, I don't want my son to learn the sitar, and we would be saying, no, you must teach your child. He said, no, there is neither, जैसे उर्दू में उन्होंने कहा कि ना इज्जत है ना पैसा है, तो either no respect, no money. It just sent shivers down my spine. Yes, he actually said to me कि maybe उसको कहीं वेटर लगवा दो. I mean, oh my God, because he felt, I mean, your heart sinks when you think about these things. कि एक घराना जो कि सदियों से, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ तो घराने होते थे ना, और पास ऑन होता है ना, बाप बेटे वगैरह, तो अब वो ये पॉइंट पे आ गए थे सेट कि नहीं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ दीजिए, अब हमारे बच्चे कुछ और काम करें तो थोड़ा सा कमा तो लेंगे, और ना हमको ना इज्जत मिली ना पैसा मिला, तो हम अपने बच्चों को क्यों बोलें कि ये करो. तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी बैड सिचुएशन. क्लासिकल डांस का आप देख लें, आप 2 नाम से ज़्यादा आप नाम नहीं ले सकते इस मुल्क में कि कोई डांसर क्लासिकल प्योर, मतलब है ना. इसी तरह से मौसीकार, इसी तरह से हर लिहाज में यही है कि आप कर नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि वो काम करो जिससे तुम पैसा बना सकते. अब आप सोचें कि एक माशरा शायरी के बगैर कैसे, अगर आप शायरी करते हैं तो आप ये तो नहीं सोचते ना कि मैं ये शेर लिखूंगा तो कितना पैसा कमा लूंगा, ये नज़्म लिखूंगा तो इस तरह से आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं ये गाना गाऊंगा तो कितना पैसा कमा. आई मीन, वो चीज़ पैसा आता है जाता है, वो तो ज़िंदगी का एक मसला है, और यकीनन सबको पैसे की ज़रूरत है, मतलब घर कैसे चलेगा, पेट कैसे भरेंगे अगर पैसा नहीं है. मगर ये तय कर लेना कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए हमारे माशरे में, क्योंकि ये चीज़ों से कमाई नहीं हो सकती है, तो फिर तो आप माशरे को डेड माशरा बना रहे हैं. मैं तो समझ रही हूँ, nobody has the right to decide that, and I feel कि if you do decide that, you are deadening, you're killing your people, you're killing your society, and that's why I feel कि आधी सोसाइटी तो मर चुकी है और आधी मर रही है भूख से और महंगाई से, और दूसरी मर चुकी है जहनी तौर के पर. आपने इतना दबाया है, और ये कि मैं कुछ समझती हूँ तो मैं खड़े होके बोल तो नहीं सकती, क्योंकि आपको वो बात नहीं अच्छी लगेगी तो आप एग्जैक्टली आके मार देना. तो ये तो आई मीन
एक्सेप्ट जो खूबसूरती थी मैं समझती हूँ सब कॉन्टिनेंटल सोसाइटी में एब्सोल्युटली प्लूरलिज्म सिंक्रेटिज्म डाइवर्सिटी मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले हुए थे और वही एक खूबसूरती बनाते हैं. But continuing this, I would like to add कि ये I mean this is what the reality at the moment at present is. But at the same time क्योंकि देखिए कोई कभी भी सिर्फ black and white चीज़ें नहीं होती हैं. They are gray areas. Yes, at the same time जैसे मैं खुद जो हूँ हमने पिछले दिनों में 3 वीकेंड्स पे 3 दिनों की वर्कशॉप्स की हैं थिएटर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स और इन वर्कशॉप्स में हम दीज आर रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स और इन वर्कशॉप्स में हम लो इनकम एरिया से यूथ को लाते हैं दोज हु डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी यू नो द एक्सपोजर और ऑफ द ट्रेनिंग और एनी तो उनको हम जा करके बात करते हैं एंड देन वी टेल देम कि दिस इज़ व्हाट वी आर ऑफरिंग एंड तो जो वो लड़कियां अब आप ये सोचें कि इस माशरे में 14 साल से 24 साल की उम्र की लड़कियां भी आ रही हैं लड़के भी आ रहे हैं दे आर स्टेइंग विद अस वी आर रेजिडेंशियल दे ईट विद अस दे वर्क विद अस दे टेक ट्रेनिंग विद अस दे ब्रिंग देयर आइडियाज़ और सबसे ज़्यादा देयर इन्वॉल्वमेंट इन व्हाट दे आर लर्निंग देयर कमिटमेंट कि भैया हाँ ये हम सीख लें 3 दिन में हम ये सीख लें कि एक कहानी को हम थिएटर स्टेज पे कैसे बयान कर सकते हैं तो हम खुद ही एक ग्रुप बना लेंगे अपने इलाके में ग्रुप बनाएंगे वहाँ हम परफॉर्म देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप बिकॉज देखिए जब तक इंसान की ज़िंदगी है वो होप तो रहेगा ख्वाब तो हम हमेशा ही देखते रहेंगे ना वो तो नहीं बंद होंगे तो ये सब कुछ है एंड आई फाइंड दैट द यंग पीपल जिनसे हमारा रोज़मर्रा का ताल्लुक़ रहता है दे आर द वंस हु इंस्पायर अस दे आर द वंस हु गिव मी होप टू कंटिन्यू बिकॉज दे आर द वंस हु वांट टू लर्न they want to get as much as they can and they feel you can feel it from their energies कि वो चाहते हैं कि वो तब्दीलियाँ लाएं वो बदलें अपने environment को अपने neighborhood को अपनी ज़िंदगी their energy drives us to do better. So ma'am, throughout your life what was the most struggling point in your life? What was the most struggling moment? Well, my life has been actually a constant struggle, but never a struggle that has made me feel that I need to want to give up. Always a struggle which has made me want more challenges and yeah. So somehow there are painful moments, there are painful times, you know, which happen. I think in the life of people who are trying to do things which are different. I mean, you know, one is always walking against the wind, as it says, no? So, sailing against the flow. Yeah. So, so mentally, emotionally, I'm prepared for all that. I mean, कि कल को कोई मुझे आकर के धमकी दे जाता है या तंग करने आ जाता है या शायद कल को कोई आके मुझे मारने आ जाए, क्या कर सकते हैं? I mean, I'm not going to run away. I am ready. I'm ready for it all, and because when I get into this, उसी वक्त one decides कि yeah, well, one is not going to compromise. I don't know about the most difficult point, but I know that what I do feel proud of is that I have lived my life without any compromise. अगर जो मैंने जो समझा है कि ये सही है वो मैंने किया है हमेशा. मैंने ये समझा कि ये करना है मुझे वो मैंने किया. अगर मुझे लगा कि no, this is not right and no matter how much benefit I may get out of it, I'm not going to do it. I don't do it because and then I think this can only work when you decide in your life कि what are your priorities. मेरी priority ये नहीं थी कि मुझे एक बड़ी सी SUV चाहिए या एक बहुत बड़ा घर चाहिए या एक 10 एयर कंडीशनर्स चाहिए. मेरी ये कभी भी ज़िंदगी में priority रही नहीं है. I'm not interested in those things. I am interested in something spiritual, in something more yes, more I don't know if I would use the word spiritual, but mystical maybe. Yeah, mystical, more
something that feeds your soul. Yes, something that makes me happy, because what will make me happy is when everybody else around me is happy. अगर मैं यहाँ पे बैठ के सुन रही हूँ कि कोई उस अपार्टमेंट में शौहर जो है वो अपनी बीवी को रोज़ाना मारता है, तो मैं तो रात को सो नहीं सकती हूँ, फिर मैं उठ के जाऊँगी, कंप्लेन करूँगी, कोशिश करूँगी कि ये चीज़ को रुकवा. सो दैट काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस इन अबाउट लिविंग इन एन अनजस्ट सोसाइटी does not cannot bring happiness. So happiness can come only when you feel that you are living in a society which is just, जहाँ इंसाफ है. मतलब एक बच्चा सड़क, जब मैं गाड़ी में बैठ के सिग्नल पे रुकती हूँ, जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना कि क्या करें. सो दैट इज आई मीन आई फील कि दिस इज़ व्हाट माय स्ट्रगल हैज़ बीन, कि आई वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी विच इज़ अ जस्ट सोसाइटी, वेयर देयर इज़ ट्रूथ, वेयर देयर इज़ लव, वेयर देयर इज़ ह्यूमनिज्म. और अब यहाँ पे मैं आखिरी बात जो आपको कहना चाहूँगी कि ये पिछले कुछ अरसे में जब मैंने इन चीज़ों पे बहुत गौर किया है, और ख़ास तौर से 2017 में जब सेवन शरीफ में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, और उसमें कई 100 लोग मर भी गए थे, जिसमें औरतें भी थीं, बच्चे भी थे. जी बिल्कुल. दूसरे दिन जाके मैंने, क्योंकि उन लोगों का क्या मकसद था कि यहाँ औरतें मर्द आके क्यों, वाई डू दे धमाल क्यों खेलते हैं. और धमाल क्या है? धमाल is a kind of a release. It is. It's an ecstatic release, you know, where you reach a state of trance कि you don't care कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ या कैसा लग रहा हूँ, बस मुझे अपने अंदर खो जाना है. बिल्कुल, मस्त हो जाना है. मस्त हो जाना है. उसको तो बर्दाश्त नहीं किया इन्होंने, आके वहाँ पे उन्होंने बॉम्ब कर दिया. तो मैंने फिर जब उसके बाद से जब ज़्यादा सूफ़ी लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, तो मैंने ये सोचा कि बेसिकली मौलाना रूमी, अमीर खुसरो और हमारे यहाँ के ये सचल सरमस, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये यही बात कर रहे हैं जो हम एक और तरीक़े से सोच रहे थे. वो ये कह रहे हैं कि हर इंसान बराबर है और इस चीज़ को पहचानो. Exactly. और एक दूसरे को इन चीज़ों पे ना बेस जज करो कि ये काला है, ये गोरा है, ये ऊँट लंबा है, ये छोटा है, या ये हिंदू है, या ये मुसलमान है, ये अहमदी है, या ये क्रिश्चियन है, या ये पारसी है. हर आदमी इंसान, हर इंसान बराबर है. दिस और ये कि द अदर थिंग, मतलब एक तो ये कि ये अपने अंदर का ह्यूमनिज़म जो हमारे अंदर मार दिया गया है. आपको पता है कि पाकिस्तान में कई सालों तक बुल्ले शाह की शायरी वॉज बैंड ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न. जैसे फैज़ साहब की शायरी वॉज बैंड ऑन रेडियो एंड, बुल्ले शाह की भी बैंड थी, इसीलिए बिकॉज दे सबवर्सिव. वो ये कह रहा है ना, बुल्ले शाह भी ये कह रहा है ना, मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं ना मस्जिद जाता हूँ ना मंदिर जाता हूँ ना कलीसा जाता हूँ, मैं एक इंसान हूँ. एंड दे ऑल सेइंग दिस. So this is very subversive because this is what the establishment does not want. वो तो चाहते ना हम आपस में एक दूसरे से लड़ते रहें, मरते रहें. So ये है. एंड मैं समझती हूँ कि और फिर फ्रीडम क्या चीज़ है इसके बारे में सोचना. तो आप अपने दिमाग को जितना वसी करते हैं तो आप उतनी फ्रीडम के वसी कॉन्सेप्ट्स समझ में आने लगते हैं. मतलब बैठ या दरख्त के नीचे बैठ के चिड़ियों को चहकते हुए सुनना, मतलब इट ओपन्स अप सो मेनी अदर थिंग्स इन योर. या आप उसको सुन के पता नहीं क्या क्रिएट कर सकते हैं, किस किस्म की मौसीकी, किस किस्म की शायरी, किस किस्म की पेंटिंग, मतलब क्या नहीं कर सकते. And it all leads to the thing that we from where we started, the imagination. Like and art feeds your imagination. Absolutely. Well, ma'am, thank you so much. Firstly, for giving us this space for the interview. It's beautiful. My pleasure. Like, it's full of soul. It's full of art. Thank you. And like you have made it so beautiful, I would say. शुक्रिया. Because वो भी एक ज़रूरी चीज़ है. You know, अगर आप अपना environment ऐसा बनाएं, which is conducive for you to be creative. Exactly. You know, तो अब मैं अगर गंद तो खैर नहीं कहना चाहिए because that is sometimes beyond your control. Exactly. मगर
if it's things all are messy beautiful, and like some things, हाँ, like सफाई हो, colours नहीं है, कलर्स or like हैं, कलर्स हो, फूल हो. अब यही तो सारा मसला है कि हमारे सड़कों पे, हमारे लो इनकम एरियाज में आप देखें गार्बेज कैसा, हर तरफ गार्बेज, उसकी बदबू. अब व्हाट कैन कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, तकलीफ, perhaps तशद्दुद, exactly. एक अपने पे, दूसरों पे. Environment affects your mood, it affects your personality. Totally, all the time. Thank you so much for gracing this My show, pleasure. and thank you so My much for offering pleasure. this place. I hope it is worth your time, and I hope this was worth your time.